मंत्रास होते हैं, अरण्यका टेक्स्ट ऑन द रिचुअल्स होते हैं, ब्रह्मणास होते हैं, दैट इज द एक्सप्लेनेशन, एंड उसमें उपनिषदा होता है विच इज द फिलॉसफी ऑफ दीज स्क्रिप्चर्स। जो लाइफ की फिलॉसफी है वो उपनिषदा में होती है। दैट इज व्हाई दिस केनो उपनिषद, as we are understanding, it is dealing with the philosophy. So what philosophy are we talking about today? So there is Tadvanam. What is Tadvanam? It is like how the forest, everything has a place. It is very subtle. So let us try to understand. बार बार हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मन है, ब्रह्मन है। क्या है ब्रह्मन? क्या है, कैसे ये पूरी सृष्टि चलती है? Let us take the example of a forest. So it says how a forest has everything, it has its place. The deer has a place, the lion has a place, the tiger has a place, the mongoose has a place, and so the snake. एक forest में there are different types of animals. They are big animals, very ferocious animals. They are very shy animals, rabbit. There are snake, poisonous animals. There are different variety. They are harmful in different ways. They are very shy, very subtle, very humble in different ways. All kinds of different kinds of animals are surviving in this forest without any disturbance, any requirement of any other being. ह्यूमन उसमें हो, ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है उसके बिना ये सर्वाइवल हो रहा है फॉरेस्ट में। वहां पर the trees are there, it does not exclude or reject anything, it provides for every single creature, and yet it maintains itself clean. There what happens, there is no dirt, कोई जाके सफाई नहीं कर रहा है वहां पर पेड़ है, पेड़ में से झड़ा, वो पेड़ बूढ़ा हो गया, गिर गया, डिमनिश हो गया, उसके बाद वहां पर जो बीज गिरे थे उसे छोटे छोटे पौध फिर से निकल आए। फिर से जो हमारा सीजन है, चेंज है, उसने उस मिट्टी के हिसाब से अपने आप उसको पानी दिया, अपने आप उसको ठंडक, धूप, सूरज की गर्मी, इट इज गेटिंग एवरीथिंग. It does not require any interference of anybody. It is getting sustained on its own. The cycle is going on. Just imagine. वहां छोटे पेड़ भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, घास भी है, उसमें फूल भी हैं कलरफुल, उसमें फल भी है जो उन एनिमल्स के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वेजिटेरियन हैं, वो वही फल फूल खा के, पत्ते खा के, वही सर्वाइवल। सी द इकोलॉजिकल बैलेंस, सी द सिस्टम ऑफ नेचर, एंड मैन थिंक्स दैट ही हैज द पावर, ही इज डूइंग एवरीथिंग। एक फॉरेस्ट में बस मैन नहीं है, जब मैन उसमें एंटर करता है तो मैन उसको कहीं ना कहीं अपनी ग्रीड से, अपने सेल्फिश स्वार्थ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परेशान करता है। Is man only for that? Is it only for that? The survival of this forest is happening on its own. The plants, the small creatures are the food of the big creatures. Even they are the food of the bigger creature. And this ecological balance is going on. The plants, the small plants, the bigger plants, even the bigger plants than the trees, they are giving shade, they are giving fruits, they are giving everything, the oxygen, the carbohydrate, everything is happening. The balance is maintained. This is how this Prakriti works. The whole universe is
sustaining itself on its own. The system is happening. छोटा है तो अपने आप जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, गुड भी है, बैड भी है. अगर हम सोचें कि सिर्फ बैड ही बैड ज्यादा है, it cannot survive. This universe has its own balance. जहां वो डगमगा जाएगा. अब आप देखें, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहीं कम है, कहीं ठंड बहुत ज्यादा है तो कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा है तो कहीं एकदम सूखा है. It is balancing itself. But if we understand this phenomenon, if we understand that this is how this universe works, the balance is maintained on its own. That understanding in every action, in every thought, both things are happening together. Eyes are closing and eyes are opening. Thoughts are coming and thoughts are going. The contraction is happening and the expansion is happening. This is how this nature works. And only through this nature, it is called as life. If the life is there, if the action is there, then it has both poles together complementing each other. One virtue, one sutra given by our Guruji, opposite values are complementing each other, is not just one line. It is so subtle. As we are going deeper in knowledge, the meaning is opening manifold times. प्रकृति को हम देख रहे हैं, उसमें वो बैलेंस कर रहा है फॉरेस्ट हर तरह से, वेदर से, खाने से, उसकी जो वीड है उससे, जो उसके प्लांटेशन है उससे, जो एनिमल्स हैं उससे, हर तरह के ऑपोजिट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हाउ एंड व्हाई दिस माइंड, दिस man, because he has a little will, he can do some action with his own thought, can become a doer. Is he capable of doing anything? And as we understand, as we realize this gift, this whole system which is happening, that you are just a part of it, you want to harmonize it or you want to have friction in it. जैसे हम उसके अगेंस्ट चलते हैं, वो चैलेंजेस और हमें और पेन देते हैं, सौरो देते हैं. As we are flowing with this energy, with this system, if we understand these sutras well, if we apply them well in our thoughts, in our intellect, in our memory, in our ego, then जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें हैं, एक बहुत बड़ा माउंटेन खड़ा है, आपको दूसरी तरफ जाना है, उस माउंटेन में छेद करके दूसरी तरफ जाना कितना भारी होगा. और वही अगर छोटा सा रॉक है, उसको आप आराम से हटाओगे, हट सकने लायक होगा, तो आप उसको जा सकते हो. How big that blockage you are creating in front of that free flow of energy. Bar, the nature of the mind is, it goes again and again, it is pulled toward the consciousness, towards that self, towards that source, and it comes back. It goes back, again it is pulled. वहां पर उसको रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है, फिर वो फिर से वापस आता है दुनिया में, फिर जाता है, फिर आता है. This is the nature of the mind. It is searching for peace. It goes for peace and again it is reflected back. It comes back, bounces back again. So this is the nature. If we understand this phenomenon of nature, then this beautiful gift, as this life, as this human body, can be honored, admired,
a different platform. हम देख रहे हैं कि वो कितना हल्का, उसमें जो हम छोटा छोटा स्मॉल माइंड से जो थॉट्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो रोक देती हैं उस फ्री फ्लो को, वो कितनी साफ होके झड़ के साफ हो जाएंगे. आई वॉज लिसनिंग टू एन एग्जाम्पल, यू नो, जब मिट्टी बहुत सारी बढ़ जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेक, उसको झाड़ना है और फिर उठ के खड़े हो जाना है. दिस इज व्हाट ऑल एनिमल्स डू on their own, and they start. And the same हम क्या करते हैं, man because it has will, it has a little will, उसका मन, उसमें एक्शंस करने की थोड़ी सी क्षमता है, तो वो उससे रोक लेता है. डस्ट है, उसको भी संभाल लेता है, अरे मेरा डस्ट है, मेरी चीजें हैं, मैं, ईगो और इग्नोरेंस और illusion, whatever you want to say. So as this illusion comes to reality, you start living in the truth. As this ignorance comes towards the knowledge, that light starts to blow up. As this sorrow goes towards the happiness, that joy, the fountain of joy, starts to bloom. So let us understand this a little bit more. So it says, and also the forest never gets dirty. It is cleaning on its own because the recycling system through the earthworm in the soil is happening. अर्थवॉर्म हैं और भी क्रीचर्स हैं, वो सब अपने आप उसको रिसाइकल कर रहे हैं. और आप देखेंगे वहां बिल्कुल लश ग्रीन ग्रास होती है, बहुत सुंदर. For ages it has not, unless man walks into it and dirties it through its cans, potato chips, cokes, whatever, litters the forest. The forest maintains itself and provides for everybody. So this is a very good conclusion. Environmentalists will be so happy and thrilled. उसमें हम इतने पेस्टिसाइड डालते हैं, इतने केमिकल्स डालते हैं, उस मिट्टी को अपने मतलब से, उसको हम छोटे माइंड से सोचते हैं कि वी आर डूइंग, अपना कोई फायदा कर रहे हैं. हाउ कैन इट बी गुड फॉर यू? दैट स्मॉल इंटरेस्ट which is not going to be carried, which is not going to help you, which is not going to give you rest, give you joy, give you happiness. We are running towards it. If this true knowledge prevails, satyam param dhimahi, om bhurbhuva swaha tatsaviturbharenyam, Gayatri mantra. If this true knowledge prevails, nothing can touch you, no sorrow can touch you. That enthusiasm, that free flow will remain. You will become a beautiful instrument through which all the energies are want to get connected. वो energies आती हैं उनके पास, ऐसे instrument के पास. They want to use that instrument in the best possible way. So are we available for those energies to flow through, reflect through? हम सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं. What is the seva? This can be the biggest seva, to empty yourself totally. Be empty from any impressions, empty from any desires, empty and still walking with full enthusiasm. Mind is at rest and hands are in full action. Yes, so this knowledge is not complicated. It is little complex, but that complexity is helping to know the diversity of the system. एक से अनेक और अनेक में एक. So let us be with that. अभी हमने क्रिया करी है, उसके बाद एक इस अनेकता को, डाइवर्सिफिकेशन को, और उस अनेकता में एक को, लिविंग इन दैट ट्रुथ. लेट अस बी इट.
That is it. And let us be with it. And any questions, any doubts, anything you want to express or say, you can be, because अब हम आगे बढ़ेंगे केनोपनिषद हमारा, it is coming to an end because it is a philosophy. And then we'll go on towards the Isha philosophy and the Katha philosophy. And then let's see what this mind says, where it wants to do, how it wants to open further, because this learning, this knowledge has no end. Every smallest moment is teaching you. Are we ready to perceive? Are we ready to let that knowledge seep in? So, to prepare this instrument for this knowledge, for this learning of this present, this knowledge supports you, this atmosphere supports you, and this platform. And we are so blessed to have such a guru who is guiding us so that we know the path to walk on. Jai Gurudev. So let us chant Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namaha Pranavaर्थाय शुद्ध ज्ञानिक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीये महामृता. ओम श्री श्री गुरुभ्यो नमः. Hari Om. Each of these mantras are full of this wisdom, this knowledge. पूरा भरा हुआ है. Take any mantra, and this is, and if you understand them well, they start dropping that nectar along with. उसमें से जो वाइब्रेशंस हैं, उसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है, एक ब्यूटी, एक टेस्ट, एक सब कुछ ऐड हो जाता है. तो सत्यम परम धीमहि, लेट्स चैंट. अपने मन से भाव से चैंट करें सब, दैट दिस नॉलेज इज रिमेन्स विद माय इंटेलेक्ट. मेरी बुद्धि में ये ही स्थापित रहे, ये मेरे से दूर ना जाए, ये मेरे में बना रहे. सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम. नीलम जी करें. सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्यम परम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि. सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ॐ
Shanti. 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 Jai Gurudev. Jai Gurudev. Keep enjoying and walking on this path. Keep moving. Jai Gurudev. Yes, anything anybody wants to say? Yes, beautiful. Jai Gurudev.